Good morning, everyone, and today we are going to talk about Matthew Arnold. Matthew Arnold was born in 1822 and he died in 1888. Matthew Arnold एक प्रोफेसर थे, एक स्कूल इंस्पेक्टर थे, and he represented his classical ideas and flaws in modern society, in modern life. इनको सेज राइटर भी कहा जाता है. A sage writer is a writer who instructs readers on social issues. Now we are going to talk about some of important works, okay, and afterwards we will do a long survey on his works. So his first work is Memorial Verses, and Memorial Verses that was dedicated to William Wordsworth in 1815. तो it is an elegy. विलियम वर्ड्सवर्थ, गोदे एंड बायरन को ये ट्रिब्यूट है. Next work is Empedocles on Athena. It was published in 1852. It is based on Greek mythology. Greek mythology में एक philosopher Empedocles का जिक्र आता है. तो Empedocles की डेथ पर he writes down this great work. And Empedocles is a person who plans to commit suicide because he thinks himself very useless intellectually, politically, and physically. So he thinks himself that he is worth nothing, I should commit suicide, and such type of things are just coming into his mind. Meanwhile, his two friends convince him not to do so because life is worth living. We have some aim to live in. But due to the verge of डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही कमिट सुसाइड. नेक्स्ट वर्क इज़ टू मार्गरेट. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1852. एवरी मैन इज़ एन आइलैंड. इस पोएम में एक लाइन आती है, एवरी मैन इज़ एन आइलैंड. इन दिस पोएम ह्यूमन बीइंग हैव बीन कंपेयर्ड टू आइलैंड. This line has been taken as a context from Donne's poem. Donne की एक पोएम है, Devotions upon Emergent Occasions. Devotions upon Emergent Occasion. यहाँ इस पोएम में एक लाइन आती है, No man is an island. तो यहीं से लाइन को लेकर के आर्नोल्ड ने मार्गरेट लिखी, टू शो हाउ डिस्टिंक्ट वी आर फ्रॉम ईच अदर, हाउ डिफरेंट वी आर फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट वर्क इज स्कॉलर जिप्सी 1853. जोसेफ ग्लैनविल. जोसेफ ग्लैनविल का एक वर्क है, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. इस पर ये बेस्ड है. इट इज़ एड्रेस टू स्कॉलर जिप्सी. स्कॉलर जिप्सी इज़ अ पर्सन हु जॉइंस द बैंड ऑफ जिप्सीज इंस्टेड. अर्लियर ही वॉज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके वो जिप्सीज़ के एक बैंड को ज्वाइन करता है. नेक्स्ट वर्क इज सोहराब एंड रुस्तम. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1853. सोहराब रिप्रेजेंट टू Tartar army, and Rustam represents to Persian army, and he is the leader of Persian, and Sohrab is the leader of Tartar army, and both of them have duel, and in that duel Sohrab is killed by Rustam. And during the duel both of them don't know each other that he is my father or he is my son, but in the end when the duel ends up, सराब इज़ सीवियरली wounded and he is just going to die. तो वो रुस्तम को बताता है about his father, and when Rustam comes to know that, oh, what I've done, he is my son, and in the last he gives him a royal burial. नेक्स्ट वर्क इज़ बाल्डर डैड 1855. ये नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड है. ऑडिंस का बेटा बाल्डर, एक ऑडिंस नाम का कैरेक्टर आता है जिसका बेटा है बाल्डर, उसके मर्डर पर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है. नेक्स्ट वर्क इज़ थायरसिस. that was published in 1865. It is an elegy. It is written on the death of Arthur Hugh Clough. Arthur Hugh Clough की डेथ पर ये लिखी गई है. It is a pastoral elegy. This is elegy just like other poets also have done so. As Shelley has written Adonais, and William Shakespeare also wrote about one of his friend, Mr. W.H. So in the same way, in this poem, Thyrsis Arnold also writes about one of his intimate friends. The name of the friend is Arthur Hugh Clough. Next poem is Tower Reach. It published in 1867. And this is the poem.
This is the work of Matthew Arnold, which made him extremely famous among the Victorian poets. And in Victorian poets, Tennyson, Browning, and Arnold, they are the main poets of Victorian era. Next work is Rookby Chapel. Rookby Chapel is an elegy which he wrote for his father. थॉमस अर्नोल्ड इस पोएम में वर्च्यू ऑफ हिज फादर रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फादर की क्या वर्च्यूज़ थी। और ये पोएम जो है 15 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर वॉज रिटन। दिस पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। जब 15 साल हो गए उसके बाद इस पोएम को लिखा गया। Now we are going to do a survey on life and works of Matthew Arnold. He was born on 24th December 1822, Laleham, Middlesex, in the valley of Thames River, England. He died in 15th April 1888, Liverpool, of heart failure. हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी और इनके फादर की डेथ भी हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। ही वॉज वरीड एट ऑल सेंट्स चर्च, लालेहम, सरे। इनके पेरेंट्स का नाम है थॉमस अर्नोल्ड एंड मदर का नाम है मैरी पेनरोज अर्नोल्ड। एजुकेशन, इनकी एजुकेशन एट रुकवे स्कूल एट बिलाइल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई। इनके स्पाउस का नाम फ्रांसिस लूसी विटमैन अर्नोल्ड था, जो 1851 में इनके साथ इनकी मैरिज हुई। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ही टुक poetries and criticism, so he is known a great Victorian poet and critic. Now we are going to survey about his life. His father, Thomas Arnold, a young clergyman, was known as a prominent educator and historian. Okay, so